ধুবুৰীত ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমৰ উদ্যোগত বীমা সচেতনতামূলক পদযাত্ৰা। ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমৰ ধুবুৰী শাখাৰ উদ্যোগত আজি এক বিশাল পদযাত্ৰা উলিয়ায়। এই পদযাত্ৰাৰ জৰিয়তে জীৱন বীমাৰ পৰা ৰাইজে কিদৰে আৰ্থিক নিৰাপত্তা লাভ কৰি উপকৃত হ'ব পাৰে তাৰে সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়াস। পদযাত্ৰাৰ ৰঙীন ফিতা কাটি শুভাৰম্ভণি কৰে বঙাইগাঁও মণ্ডলৰ জ্যেষ্ঠ মণ্ডল প্ৰবন্ধক শ্ৰীযুত হৰিহৰ নাইক। এই পদযাত্ৰা ধুবুৰী শাখা কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ ধুবুৰী চহৰৰ মাজেৰে আহি আকৌ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সমাপ্ত কৰে। পদযাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাইজক বীমা সম্পৰ্কে সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়াস। ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগমে এটা পৰিয়ালক কিদৰে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে, দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়ালে বীমাৰ পৰা কেনেদৰে উপকৃত হ'ব, তাৰ লগতে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ উপকৃত হোৱা বীমা আদিকে ধৰি সমাজ তথা ব্যক্তিগত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জীৱন বীমা নিগম অতি আৱশ্যকীয়। বীমা প্ৰতিজন ব্যক্তি তথা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত জৰুৰী বুলি ৰাইজক সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে। আজিৰ পদযাত্ৰাৰ জৰিয়তে সকলোকে बीमा करी आर्थिकभावे निरापत्ता लाभ करार आह्वान। का प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम धुबरी शाखा। आज हम लोग अपने धुबरी के नगरवासियों के बीच में भारतीय जीवन बीमा निगम और लाइफ इंश्योरेंस को लेके जागरूकता के लिए एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है उनके लिए। आज बदले हुए परिवेश में जबकि बहुत सारी दुर्घटना ऐसी होती हैं जब परिवार को अचानक से कोई धक्का पहुंचता है, वैसे में लाइफ इंश्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय में आप कहाँ जाइएगा। हाँ, तो लाइफ इंश्योरेंस भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि 1956 में जिसकी स्थापना हुई थी, वो तब से लेकर राष्ट्र के सेवा में, राष्ट्र के लोगों के सेवा में लगा हुआ है। उसी के संबंध में हम लोगों को फिर एक बार जागरूक करना चाहते हैं कि वो बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं करें, लेकिन साथ ही साथ कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस लेके जरूर रखें। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने अभिकर्ता बंधु, अपने विकास अधिकारी बंधुओं के साथ इस शहर में आज एक पदयात्रा कर रहे हैं। धन्यवाद। आज खुशी और गौरव की बात है। मैं सबसे पहले हमारा धुबरी वासियों को मैं मेरा शुभेच्छा देता हूं, साथ साथ मैं मेरा प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम सारा देश में हम लोग बीमा महोत्सव व बीमा प्रोग्राम हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग आज धुबरी शहर में हम लोग मार्च करेंगे, मतलब बीमा रैली करेंगे। उसके चलते हम लोग को पब्लिक अवेयरनेस करने का एक मौका है। साथ साथ हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर से बेहतर सेवा दे पाएंगे बीमा के क्षेत्र में, ये हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को हम लोग कॉमन मैन माने साधारण लोगों को पहुंचाने का हमारा मकसद है। दोस्तों, मैं चाहूँगा हमारा जितना भी साथी आज चाहे हमारा अभिकर्ता हो, चाहे हमारा विकास अधिकारी हो, चाहे हमारा ब्रांच अधिकारी हो, सारे अधिकारी तमाम मेरा अभिकर्ता को साथियों को मैं मेरा शुभेच्छा देता हूं। साथ साथ मैं उनको गुजारिश करूंगा जे आने वाला समय में हमारा धुबरी शाखा की तरफ से हम लोग धुबरी एरिया में जितना सारा जनसाधारण है उसको हम लोग बीमा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सुरक्षा देने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। प्रथम जनाइছোঁ আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। এটি মহান অনুষ্ঠান বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম ধুবুৰী শাখাৰ তৰফৰ পৰা এটি পদযাত্ৰা। এই পদযাত্ৰাটো হ'ব আচলতে বীমা সচেতনতামূলক এটি পদযাত্ৰা। আমাৰ সমাজত ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম, আমাৰ LIC বুলি সকলোৱে জানে। LICৰ যি অৰিহণা আছে সমাজত, ব্যক্তিগত জীৱনত, পৰিয়ালত, এইটো মানে আমি ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ অৰিহণা এটা আছে। গতিকে বীমা আমাৰ সকলো পৰিয়ালৰ কাৰণে, প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ কাৰণে, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী। এই কথাটো বুজাবৰ কাৰণে, এই কথাটোৰ প্ৰতি সচেতনতা আনাৰ কাৰণে আচলতে আমি এটি পদযাত্ৰা আজি আয়োজন কৰিছোঁ ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম ধুবৰী শাখাৰ তৰফৰ পৰা। আমাৰ ব্যক্তিগত সামাজিক এই কথাটো ক'লোৱে, লগতে আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও যিবিলাক আমাৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ হয়, তাতেও আমাৰ আৰ্থিকভাৱে যি সহায়তা LICৰ তৰফৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ প্ৰদান কৰা হয় ভাৰত চৰকাৰক।
এইটো আপোনালোক সকলোৱে জানে। গতিকে আমাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত আমাৰ আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। যিজন ইনকাম কৰা ব্যক্তি তেওঁৰ হঠাৎ যদি কিবা এটা হৈ যায়, তেওঁৰ পৰিয়ালক সুৰক্ষা, আৰ্থিকভাৱে সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে LIC অপৰিহাৰ্য আমাৰ জীৱনত। লগতে ইয়াতে বিনিয়োগ যিটো হয়, ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি আমি যিটো কওঁ, এইটো ইনভেষ্টমেণ্ট আমাৰ ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট। আমি ৰিটাৰ্ণ ধুবুৰীৰ পৰা তাপস চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, সুহানা লাইভ।